Good. Okay. So, what's your idea about training and development? What do you think training and development is? I'd like to know you from you first, and then I'll start. Ma'am, as we hire any employee from the campus or from any source, we need to make them understand our rules and regulations, our policy about the company, what we are about to, and many information which are needed to know the employee who is joining our company. So Hmm. for that, we organize a training. Duration of the training can be vary according to the trade and according to the person as well, and development through training and through uh, working in the particular company, the person, any individual learn many things, and through that we can say that training and development is an important part to serve any company. Yeah. So, what you are saying about training and development is basically onboarding. That's what. So, onboarding, yes, is a part of a training program. But onboarding training is more about the introduction of the company, employees, policies, and procedures, what they need to follow, all those things. But other than that, what other trainings and development is required? Why companies have such big, large training and development departments? And training varies according to the work which are being provided to the particular employee. If someone is, for example, someone is appointed at the post of a particular technical post, then he or she will be needed technical training for that work. So training will vary according to the trade which is being provided to the employee. Yeah, that's true. Okay. Shivang, from your side? Uh, Sorry, ma'am, I can't connect at that time. The question is that what do you understand? What do you think what training and development is? Training and development is that it is for employees to enhance their knowledge and skill. Hmm. What kind of knowledge? What skills? Ma'am, for example, if somebody is being hired for the post of HR, then he or she will be needed the training based on the work he or she is going to provide to the company. So I'm not being clear that what are you asking about training, because I'm it is asking about basic. What do you understand by learning and development? Yeah, training and development. Just a basic understanding. okay, ma'am. So I've given the definition, and apart from this, I'm not able to recall Anything anything to else. perform better. Yeah, yeah, carry on, Shivang. Ma'am, we can say a real exposure, Real exposure like? like anybody who is studying earlier or not working from many years, then he or she will be like not so practically enhanced, skilled. So when they go through the training part, they know the actuality of that department, of that company, how the company is working, how the people there are working or uh, contributing in the work. So the practical skill implementation can also be termed as training. Yeah, okay. All right. So, what do you understand is difference between training and learning? Why some companies call it as training and development department, some companies prefer to call it as learning and development department.
What is the difference between? So development remains the same. What is the difference between training and learning? Think about it. I'm training. I don't think it doesn't require any previous uh, skill or knowledge. If somebody is not, for example, graduated from a technical degree and he or she is applying for a technical post, then by training he or she will be able to do the work. But in learning process, somebody has to be pre knowledgeable about the trade, and learning provides simply a broad spectrum of uh, anything that is being done by the company, or by not by the company in general also. Learning is a general thing which should be known to everyone, and training is something that can be very according to the trade, according to the post, or whatever is being provided, or whatever is being given to the somebody. Okay. Anybody else? I think ma'am is taking class. It is learning, Okay. and training is just we uh, give training through speech, just information. नहीं समझी मैं, to be honest. What we are doing fine is you're comparing it with the class that we are doing, right? Yes. But the similar classroom training happens in organizations also, right? So why it is two different terms that we are using? Ma'am, you were asking about training and learning difference. Yeah, we are talking about training and learning difference. So, ma'am, according to me, like learning is a broad concept in which we learn vast variety of things, but training is one particular, like for doing some job or any other work. So the set of skills required for that only we used to train the people. So yeah, this only that learning. From my point of view, learning is a broad concept in which all necessary things are taught to you. But in training, according to your job or the work you have to do, according to that you are trained about the set of skills which you want. Right. Okay. Now that's a good point. Anything else that you find as a difference? What do you do in colleges and any institutions that you join? Is it a training or is it learning? Learning. Ma'am, it's learning. Right, that's learning. Okay, so you got the idea. So what is training then? With experts, I think. Anything that you require something very specific on skills or knowledge or competency becomes training. Right? Other than that, everything else is either learning or development. Right? Development obviously is a larger term. Now let's come to development. Let me understand from you that what do you understand from the term development? And how does it differ from training? Ma'am, See, training is just training a and process development. by which Sorry, carry on. training is just a process by which we are being trained as per the work, or whatever is given to us. So it is just a skill, uh, what we say, skill based performance or task
but development, how we perceive that training or learning and how we implement that in other area also, then we can say that development, and that is how it is differ from Yeah, the very good training. point. Right. So implementation of whatever you have learned so far is very important for the development. Now, how development is different from growth? If we say that, you are growing, or you're growing in your area, or you're developing in your area, what is the difference between the two? Ma'am, when we analyze our development, like is it in the right direction or not, and then we correct our mistake or our learning, and we analyze that our work is going in the right direction or not, and if it is going in the right direction, or the output which was expected from the development part was being occurred, then we can say that it is a growth. And when the development go in the negative term, like development cannot only be positive, because when we learn things, we perceive it in a different manner. We perceive it positively also and negatively also. So when the positive development occurred, then it can be termed in the term growth, and vice versa. And how is the negative development happens? And what Like will you call ma'am, for negative example, development? we can say that the social media is providing us very vast platform to know the world, but it is also contributing us to waste our time so much if we're not enough learning from this platform. So it can be like this. But there is no development that's happening in that. You might be learning few skills through using social media, but is there any development that is happening? Ma'am, we know different kind of technology, different kind of thing which is happening around the world, so we can say that it is a development by learning. But till the time, Abhi, you said the development is if you're implementing the learnings, right? So if you won't implement, then obviously you will not develop. So how can it be negative? Anything that is developing as a word is itself is positive, right? कुछ develop कर रहे हैं, we are bringing something up. Similarly for growth. Growth is also a very positive word. So you cannot really use them in a negative connotations in English ऐसे भी, right? So when we are using it in learning and development, growth basically becomes a part of our overall structure, which means that when you're growing inside the organization after your learning and development, then you're growing in your career, then you're growing in your status, then you're growing as a human being also. So that growth is visible to everyone, which is holistic. So holistic is overall, completely. So only the growth of an individual or in the organization, or just like that also outside the organization also, can only happen when you learn something or you get training onto something, certain skills, then you start developing, because now you are implementing those skills which you have developed, learned over a period of time in your day-to-day life, in your task and responsibilities. And once you do it over a period of time, that development turns into personal growth, individual growth, or maybe company wide growth if a lot of people are doing it in the organization, right? That is why whenever we are in the organization, so HR may learning and development is basically divided into two different parts. Two तो obviously हैं इसके अंदर, learning and development in itself are two different things altogether. इसके अलावा भी we talk about organizational development as a separate topic altogether. So organizational development talks about how new changes are becoming important in the organization, and how as an overall organization everybody is adapting to those changes on a daily basis, right? So for example, आप सपोज आप एक नई HR पॉलिसी लॉन्च करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट? यू गॉट टू नो समथिंग न्यू, या बिकॉज टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग so fast, so you thought कि why not to bring in a different policy altogether. चलो एक एग्जांपल लेते हैं वर्क फ्रॉम होम वाला पॉलिसी का. जैसे सडनली थिंग्स स्टार्टेड बिकमिंग डिफिकल्ट ड्यूरिंग कोरोना टाइम,
So HR के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी to create a new policy which is work from home policy. And work from home policy में जब आप घर से काम कर रहे हो, what are the rules and regulation that you will put in the policy, right? So now when this particular policy is implemented overall inside the organization for everybody, from top to down, everyone has to manage and look forward to this particular policy implementation, then it is called organizational development. That over a period of time, by using this particular policy, these procedures, overall organization changed to what it was, to something new. That particular process is known as organizational development. And it's a very small thing that we spoke about, just one policy. Generally, organizational development is very big, huge term. There are special consultants which is being hired in the organization just to manage organizational development as a whole. And when we talk about organizational development, learning and development can be a part of it. Because till the time you're not giving training to people, you're not bringing changes, so they will not be able to implement those changes, and hence that development will not be there. From the objective, from the company-wide point of view to individual point of view, this basically becomes a part of the organization like that. Right? You can see the screen, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is training. Anything related to your goals, your education, your instruction-based learning, knowledge, workshop, mentoring, skill-based thing, coaching, teaching, ability development, advising, everything comes as a part of training. Right? Now, what is learning? So we use this particular cycle, and in management term, we generally call it PACT. So PACT is procure, apply, consider, and transform. So how these four things happens in the organization as a process? Procure matlab you have to now acquire knowledge or ability, any skill that you want to learn. So for example, we hired you in the organization. I'm continuing the same example we generally continue for each subject. Right? That we hired all three of you in the organization. I am your manager. I hired all three of you. Again, some competencies I find Shivang better, in some Sakshi better, in some Anjali better. So in the competencies, you're not really good at par with whatever is required for the job to be done. We will give you acquisition of knowledge, which is your knowledge and ability is procured through that. Then we will put it into practice, which is what implementation is all about. So whatever you're learning now, you have started using it on a day-to-day basis, and over a period of time, somebody is actually evaluating that whatever you have learned, are you actually using that on a day-to-day basis or not? Because most organizations में क्या होता है, they do training and development for for employees. They call for different trainers from outside. आप देखोगे बहुत सारी LinkedIn पे अगर आप हो तो बहुत तस्वीरें दिखाई दे जाएंगी that people are taking people out for off-site trainings, वहाँ जाके मस्ती मजा भी हो रहा है, घूम भी रहे हैं और साथ साथ ट्रेनिंग भी हो रहे हैं, बट उस ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होता till the time we see this particular thing, which is application. That how much are you coming back? So आपने ऑफ साइट पे ले गए, which is outside the organization, 2 दिन आपने उनको खिलाया पिलाया, अच्छे से ट्रेनिंग दी, अलग अलग चीज़ों के ऊपर आपने उनको सिखाया. Once you're back, who is the one? Because वहाँ तो आपने एक्सटर्नल ट्रेनर बुलाया जो 2 दिन के लिए बाहर से आके ट्रेनिंग दे गया. Now who is the one in the organization who is looking into कि कितना आपने सीखा है और कितना प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हो? Till the time that portion is not complete, this cycle remains incomplete. फिर आता है कंसीडर. कंसीडर इज इवेल्युएट एंड असेस. सो एक तो हमने देखा कि आप प्रैक्टिस में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एंड देन असेसमेंट दैट हाउ मच हैव यू लर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अगर साक्षी को हायरिंग में हमने 2 नंबर दिए थे पहले कॉम्पिटेंसी में, अब अगर उसने ट्रेनिंग के बाद उस पर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाया है, सब चेंज करने के बाद भी अगर वो 2 से 3 पे या 3.5 या 4 पे नहीं आई है, दैट मीन्स अगेन समथिंग इज नॉट रियली complete. So that evaluation and assessment is that you will go for a review. You will see how much each person in the organization has actually learned and implemented through evaluation and review process. फिर आपका आ जाता है transfer and modify, which is अगर कुछ ऐसी चीजें हैं still the employee is not able to learn, there is something that you are able to get
or accept in terms of the skills, then what you do is you modify and then you adapt, right? Which is changes. Got it? So this Yes, is ma'am. your learning cycle. Okay. So these are the difference between training and learning, which I just spoke to you about. So training is basically from the outside in, done by others, majorly. There is always an external trainer who is giving you. Learning is always from the inside out. Right? It is your own motivation that you want to learn something. So in training में क्या होता है that there is a person who is giving you training, like I am doing that. Learning में क्या होगा that we are giving you assignment or we are telling you every week that you read something on your own, that you learn about theories and all those things. So then on your individual capacity, you are taking out time to research more on the topics that we are covering, and then you are learning on your own and at your own pace. राइट तो ट्रेनिंग जनरली ट्रेनर की पेस के हिसाब से चलती है, लर्निंग जनरली हमारी अपनी पर्सनल पेस के हिसाब से चलती है कि हम कितना सीखना चाहते हैं. आज मैंने आधा घंटा पढ़ लिया, कल मैं 1 घंटा पढ़ूंगी. सो दिस इज हाउ इट इज डन. And second point is training assumes relative stability, right? It assumes learning assumes continuous change, right? So relative stability का meaning क्या हुआ that you are only doing it for a period of time. जब तक आपको ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा है, आपने वो स्किल सीखनी है, आपने सीख लिया. Learning can be a continuous process. It can go on throughout the year, every time, right? You want to learn something new. आपको ट्रेनर ने कुछ बता भी दिया, उसके बाद भी आप उसको कंटिन्यूसली पढ़ते रहना चाहते हैं इम्प्लीमेंट करने से पहले. सो दैट बिकम्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. थर्ड है फोकस ऑन नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड जॉब परफॉर्मेंस. फॉर ट्रेनिंग, learning focuses on values, attitudes, innovation, and outcomes. Then training is appropriate for developing basic competencies, whereas learning helps organization and individuals learn how to learn and create different creative solutions. Novel solutions is innovative, very creative. So because you keep learning something about something, so you do more research. Right? The more research you do, the more creative implementation or your solutions you will bring to the same thing. Then training emphasizes improvement, whereas learning emphasizes breakthrough. Metanoia. Metanoia is, innovation completely. That eureka moment कि आपने कुछ नया बना लिया है and then you are doing that. So most of the organizations, you will see the startups who are now developing certain things, certain new things, they follow the learning rules of creating different things. Then other next point, not necessarily linked to organization's mission and strategies, because skill development की बात हम ज़्यादा करते हैं इसके अंदर. Learning whereas has to be aligned with organization's vision and requirements. It cannot happen without organizational goals being kept in mind. Then आता है structured learning experiences with short term focus. So training can be short term, जैसे हम कर रहे हैं 4 महीने का कोर्स कर रहे हैं, स्ट्रक्चर किया हुआ है हमने कि ये लेसन्स होंगे, इतनी इतनी चीज़ें पढ़ाएंगे. लर्निंग कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ. लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, फ्यूचर ओरिएंटेड भी हो सकती है, लर्नर ओरिएंटेड भी हो सकती है. Right? So for example, after completion of these 4 months of course in HRM, you try and develop more skills in HRM for you. Maybe through more certifications, maybe getting to know more from the books or internet, researching on each and every topic, going into the details of everything. Because यहाँ तो हमारे पास 2 घंटे हैं एक टॉपिक पूरा करने के लिए, या हर एक वीकेंड पे 4 hours है. But when you learn at your own pace, you keep continuously doing and developing your own skills and knowledge in that area, right? So that's the major differences that you talked about. So now what are the stages that happens? Generally psychological parameters होते हैं training and development. Learning and development is basically a psychological process. How we actually learn, how an individual loves to learn. तभी आप देखोगे कि एक इंसान के पढ़ने का तरीका दूसरे इंसान से हमेशा डिफरेंट होता है, right? Because for giving an example, हम क्लासरूम्स ट्रेनिंग लेते हैं. जब क्लासरूम्स में जाते हैं स्कूल्स में या कॉलेजेस में, एक टीचर है, 30 स्टूडेंट्स हैं, राइट? बट द टॉपर्स आर ओनली 1 or 2 people इन द क्लासरूम्स. टीचिंग मटेरियल भी वही है, टीचर भी वही है, पढ़ाने का तरीका भी वही है, कम्युनिकेशन भी वही है. But why the difference is that there are 28 students who are not learning in the same pace, and there are just 2
who are becoming toppers. So वो क्या हो जाता है, because it's our psychological development which happens on a different pace altogether. Not every individual is same. पर अब schools की मजबूरी है कि वो हर एक के हिसाब से अपना curriculum नहीं design कर सकते हैं, right? They are changing, they are trying. IB schools are more innovative in terms of action oriented training है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई इस तरीके की है कि जो theoretical concept है उनको भी वो करके दिखा देते हैं, so बच्चा learns much more better. Right, and it is always said in learning also, it is a very famous researchers who have done this thing, and they said that जितना आप action oriented करोगे कोई भी चीज को, right, any learning that you have seen, थ्योरी पढ़ने की बजाय जितना आप उसे करके देखोगे अपने हाथ से, you will learn better. या audio visual होगा, so you will learn better. So it is always a practice like that. So these stages that we go through while learning are called the psychological development process, which is, it starts with unconscious incompetence. So what is unconscious incompetence? Any idea? Simple English में ही. What is the meaning of unconscious? Ma'am, when we don't focus on something, but that we understood by the environment or how we have brought up to perceive the thing, or based on that we can like not so focused towards something that will be unconscious. हाँ, so Automatic जैसे unconscious हम हम कब होते हैं? हम unconscious कब होते हैं? हम क्या कहते हैं कि कोई unconscious हो गया है? जब हम पास आउट हो जाते हैं, या तो बेहोश हो गए या सो गए, you know, so you're not conscious. So your mind is not really cautious of everything that is going on. So that is a stage of unconscious. Right? Now incompetence is what? That you're not competent to do something. Right? Your skills are not developed when we're fully. yes Right. So अब दोनों को इकट्ठे मिलाते हैं तो क्या मीनिंग हुआ in unconscious incompetence? That you don't know whether you have some incompetence or not. Right? You're not aware of this particular skill or talent or anything hidden in you. Second stage आ जाती है conscious incompetence. Conscious incompetence मतलब you are aware that you are incompetent in certain areas. You're aware that there are skills you require more training and development on. Third stage आती है conscious incompetence. नहीं कुछ गड़बड़ है ma'am, these both are same. हाँ वही मैं सोच रही हूँ कि इसमें कुछ गलत लिख दिया है. थर्ड स्टेज होगी कॉन्शियस कॉम्पिटेंस. इनकॉम्पिटेंस नहीं होगी. सो थर्ड इज कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, मतलब कि यू नो that you don't know, that you know already certain things, yet you already have these skills and knowledge area that you have with you. Then fourth stage is unconscious competence. Again incompetence नहीं है, competence है यहाँ पर. So unconscious competence is कि बहुत सारी चीजें हैं आपके अंदर, skill है, you have talent, but you don't know about those things. Right? So this is how this particular stage. इन्हीं स्टेजेस के ऊपर एक और साइकोलॉजिकल टूल बेस्ड है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एनालिसिस. ट्रांजैक्शन एनालिसिस बेसिकली अनदर टूल जिसमें ये बताया जाता है कि आपके अंदर कितने टैलेंट्स हैं जिनके बारे में आप अवेयर ही नहीं रहते हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट गेटिंग टू नो व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग टू learn about different things, and this is how these four stages basically makes us more competent towards our learning. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल पहली स्टेज है जैसे जिसमें आपको पता ही नहीं है कि आपको कुछ चाहिए. राइट. यू आर अनकॉन्शियस एंड यू दैट यू डोंट नो, मतलब वो स्किल है भी नहीं और हमें उसके बारे में पता भी नहीं है. सेकेंड स्टेज है कि आपको पता है कि आपके अंदर कुछ स्किल नहीं है, और जब यहाँ इस स्टेज पे आप आ जाते हो कि आपने जॉब ज्वाइन करी, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू माइट बी एट अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, दैट यू डोंट नो कि HR मुझे जाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. राइट. Then slowly you grow to this particular stage. जो कोर्स ज्वाइन किया आपने, so over a period of time जैसे जैसे आपने कोर्स ज्वाइन किया तब आपको ये पता चलने लग गया, you are becoming conscious that yes there are skills that is required for me to attain. So you become conscious incompetence. फिर आप थर्ड स्टेज पे पहुंचते हो जहां पर आपको पता है कि now over a period of time I have learned few things. ये स्किल्स मुझे मिल गई हैं 4 महीने 6 महीने का कोर्स करके. So you know you are conscious about your competence, that these skills I have developed completely or fully.
फोर्थ स्टेज आ जाती है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, जहां पर आपको ये पता चल रहा है कि आप अभी भी कुछ चीजें हैं यू आर स्टिल नॉट अवेयर अबाउट कि आपको कॉम्पिटेंसी की जरूरत रहेगी उसके अंदर, राइट? सो दिस इज हाउ योर ओवरऑल ग्रोथ हैपेंस इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट थ्रू दीज 4 स्टेजेस। फिर आता है आपका LND साइकिल। अब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किस तरीके से आपकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट साइकिल चलती है, हाउ वी एक्चुअली स्टार्ट विद द इंटायर लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशंस। सो वन वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट, जब हम किसी को हायर कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सो वी टेक अ नोट ऑफ द कॉम्पिटेंसी, वहीं पर मैप हो जाती है कॉम्पिटेंसी एंड वी सी कि किसके अंदर कौन सी कॉम्पिटेंसी मिसिंग है या कम है, राइट? सो दैट्स वन पॉइंट. Second is when you start realizing that what is the context, what are the skills and knowledge and different kind of competency required for your companies to grow. What kind of company culture you're looking at, what are the company's goals, what are the missions, all those things. So you need to understand those things really well. Second aa jata hai need analysis. Need analysis is when we look into every individual and see what kind of competencies and skills they require in the organization. ये नीड एनालिसिस एक हायरिंग के टाइम पर होता है और एक व्हेन वी आर डूइंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का आपने फॉर्म फिल करा लिया, फॉर्म फिल कराने के बाद रेटिंग्स आई, रेटिंग से आपको पता चल गया कि अभी भी अपना काम पूरा करने के लिए जो भी उनका KRA है उसको कंप्लीट करने के लिए या पूरी तरीके से नोट करने के लिए लोगों के अंदर स्टिल कॉम्पिटेंसी या स्किल की कमी है. So you get to know during that time because you are doing annual review. So वहाँ पर आपका नीड एनालिसिस हो जाता है. इसीलिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को अब जब अप्रेजल साइकिल हो जाती है, जब हमने सैलरी रेस दे दिया या प्रमोशंस अनाउंस कर दिए, वहाँ पर हम कंप्लीट नहीं मानते हैं. This cycle gets complete only when this training need analysis is already being done inside with the performance management, right? क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है क्या, आप किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मैनेज करना चाहते हो कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ कि वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को कितने अच्छे से कंप्लीट कर रहा है, करेक्ट? तो हम कैसे कर पाते हैं, जब हम उसका सब कुछ रिव्यू करके फीडबैक्स लेकर अपने पास रखेंगे एंड देन वी विल बी एबल टू सी एंड एनालाइज कहाँ कहाँ पर कितना क्या मिसिंग है, राइट? फिर आता है क्रिएट, which is the third stage, जहाँ पर हम solution framework बनाएंगे. Solution framework is that what kind of training is required, what is the skills and competency, किस तरीके से देने वाले हैं, क्या कैलेंडर बनेगा, कब कब के देनी है, किस किस को ट्रेनिंग, कौन से डिपार्टमेंट से. So everything we will create a complete framework and this framework happens actually in terms of either in an Excel sheet or maybe on a paper and pen initially. But you will have to sit with every functional head as an HR या learning and development head. You need to go and create it with everybody and then find out a solution कि हमारा पूरा framework तैयार हो गया. कौन से individuals को basic training देना है, कौन से को higher level of development and training, कौन से को development programs के लिए भेजना है, किसका आपको career succession plan बनाना है, which is growth overall. फिर आता है प्रोग्राम डिजाइन. फिर यहाँ पर जब आपने फ्रेमवर्क बना लिया उसके हिसाब से अब आपके प्रोग्राम्स डिजाइन होंगे. तो फॉर एग्जांपल 500 लोगों की कंपनी है, अगर 500 लोगों की कंपनी में से 200 को नीड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की. डेवलपमेंट किसका हो रहा है, पीपल हु आर ऑलरेडी एट सम स्टेज पर वहाँ रुक गए हैं क्योंकि उनकी फंक्शनल नॉलेज उससे ज़्यादा बड़ी नहीं है, राइट? तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं डेवलपमेंट के लिए, they send people outside of the institute of the organization to some institutions to learn more, right? For example HR में अब आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा रोल, राइट? इन वेरियस सॉफ्टवेयर, थ्रू वेरियस सॉफ्टवेयर्स. अब आप 10 साल से HR में काम कर रहे हो, तब कभी आपको मौका नहीं लगा कुछ सीखने का इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आपने पढ़ लिया थ्योरेटिकली, यू नो कि चेंजेस आ रहे हैं, पर प्रैक्टिकली यू डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट. So हाँ, organization क्या करेगी, they know that Shivang is wonderful, last 10 years he has done really great work in HR. So now it's time for improvement, which is his development. So how the development will happen, he will be sent out for a 6-month course, a year course, or maybe side by side of the job he will be sent to a course जो generally external institutions या organizations, colleges के साथ किया जाता है, universities and colleges के साथ, right?
या फिर वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करा दी जाती हैं 3-3 दिन की, जिनको हम MDPs कहते हैं, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जिनका काम यही रहता है कि आपकी स्किल्स को डेवलप करना है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम अलग अलग एरियाज में बनाए जा सकते हैं, जैसे कोई किसी का प्रमोशन कर रहे हैं, अभी आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हैं, सडनली आपको टीम मैनेजर बना दिया है, यू आर लीड नाउ, यू हैव टू मैनेज अ टीम ऑफ 3 पीपल 4 पीपल, पर वो मैनेजमेंट स्किल्स नहीं आती हैं पीपल मैनेजमेंट वाली, तो उसको ट्रेन करने के लिए फिर देन वी ऑर्गेनाइज MDPs। सो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस लाइक अहमदाबाद IIMs जितने भी हैं वो कराते हैं, MDI गुड़गांव कराते हैं, XLRI कराते हैं, ये सब इनके प्रोफेसर्स जो हैं वो स्पेशल कोर्सेज ऑर्गेनाइज कराते हैं, वो कंपनीज में आकर भी दे सकते हैं, और दे कॉल यू एट द कैंपस ऑल्सो एंड डू दैट। जनरली लॉन्गर नहीं होते, 3 से 4 दिन के होते हैं, सो दैट यू एटलीस्ट बेसिकली लर्न सर्टेन न्यू थिंग्स, राइट। सो दिस इज हाउ MDPs इज डन। सो इसी तरीके से आप हर एक लेवल पर हर एक ट्रेनिंग के लिए जो भी आपको देनी है ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क के बाद, उसके लिए आप प्रोग्राम्स डिजाइन करना शुरू कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगेन, अगर अब बहुत सारे लोगों ने सपोज हर एक डिपार्टमेंट से आपके पास रिक्वायरमेंट आई है कि 50 लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग देनी है, देयर कम्युनिकेशन इज नॉट अप टू द मार्क, नॉट रियली दैट ग्रेट, तो आप क्या करोगे, अब आप एक प्रोग्राम क्रिएट करोगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम 5 से 6 घंटे का। वो 5 से 6 घंटे एक दिन में भी हो सकते हैं, या मे बी एक हफ्ते के अंदर 2-2 घंटे की ट्रेनिंग करके भी हो सकते हैं। So this is how you design a program, and you make ensure that all these people जिनकी communication skills अच्छी नहीं है, they all join that particular course, right? So this is how on every skill that you want people to improve upon, as per the competency mapping that you did or need analysis that you did, you are designing these programs now, right? Usually these programs are developed and designed for the entire year. तो आप एक कैलेंडर बना के उसके अंदर डाल देते हो कि इन डेट्स पे ये प्रोग्राम होंगे, ये होंगे, एंड यू अनाउंस इट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन वाइड हर एक एम्प्लॉय या उनके मैनेजर सब लोग रेडी हो जाएं, उनको पता रहे एडवांस में कि ये डेट्स पर ट्रेनिंग होने वाली है, सो दे डोंट प्लान एनीथिंग एल्स ऑन दोज डेट्स, बिकॉज वो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। फिर आता है आपका डिलीवरी, विच इज डिलीवरी एंड मैनेज प्रोग्राम्स। जो आपने अब प्रोग्राम्स डिजाइन कराए उनको डिलीवर कौन करेगा? You have internal people who are going to give that training, or you are going to call external trainers who are specialized trainers for doing that. So वो सब आइडेंटिफिकेशन और किस तरीके से आप उन प्रोग्राम्स को मैनेज करोगे ऑन अ डे टू डे बेसिस, जब भी वो स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी। देन आता है लास्ट, विच इज इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स। तो आपकी पूरी साइकिल के अंदर सब कुछ हो गया, आपने इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया, डिलीवरी भी हो गई, प्रोग्राम भी समझा दिया। नाउ यू हैव टू सी हाउ मच पीपल हैव इम्प्रूव्ड अपॉन देयर स्किल। सो अगर वो कम्युनिकेशन स्किल्स हमने ट्रेनिंग दिया, कैप्सूल ट्रेनिंग 6 आवर्स का, उस 6 आवर्स की ट्रेनिंग के बाद हाउ मच पीपल हैव इम्प्रूव्ड। सो वो 50 लोग जिन्होंने अटेंड करी थी, उनके ऊपर आपने एक इवेल्युएशन सिस्टम बना के रखा हुआ है, जो जनरली 3 से 6 महीने का होता है इवेल्युएशन सिस्टम, जिसके अंदर कुछ कुछ टेस्ट होते हैं, क्विज प्रोग्राम्स होते हैं जो आप भेजते रहते हो एज अ ट्रेनर उनको करने के लिए, एंड देन यू विल सी वेदर दे हैव रियली डन, एंड देन यू टेक 360 फीडबैक ऑल्सो ऑन दिस, कि उन सबसे पूछने के लिए कि हाउ मच देयर कम्युनिकेशन स्किल्स हैव इम्प्रूव्ड। Correct? So this is how the cycle of training and development actually works in the organization in 100% practical terms. Very time consuming ट्रेनिंग एंड नीड एनालिसिस से सेकेंड वाले से लेकर 6th वाले तक, एवरी पॉइंट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन। बहुत सारा काम इन टर्म्स ऑफ हर एक एम्प्लॉय को इवेलुएट करना, किसको क्या स्किल्स चाहिए, हर एक की नॉलेज को चेक करना, ऑल दोज थिंग्स बिकम्स वेरी, और जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना ज़्यादा काम। देन आता है क्यों लर्निंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, right? So let's understand from you, what do you think कि क्यों, इन पॉइंट्स को आप elaborate करने की कोशिश कर सकते हैं तीनों लोग। Who wants to start? Ma'am, to learn new things, to ये add क्यों मैं पॉइंट्स that इन्हीं को एक्सप्लेन कर सकते हो आप। So first is better career opportunities. So why do you think better career opportunities will come? because as we work in the organization, we used to learn various things.
in practical, and Hmm. our skill are also get implemented. So we have we go through the practical implementation, and by that we get confidence also. And if we are performing better in our department or whatever the work we have given to, then based on that we have a better career options also, because we do excel in our job, then we'll get promoted or we'll get higher salary in terms of money, you can say. Hmm. Okay. And if we perform better, then we have to uh, we have uh, generated a motivation within ourselves that we are going good in terms of our work culture, or we are satisfied by the work whatever we are doing. Then challenges, as we work in the नहीं culture सारे of तुम्हें that नहीं कहने हैं, let company. other people also talk about it. Okay, ma'am. let But Sakshi ma'am, talk these points about. are interconnected, so Yes, ma'am. that's why हाँ सब interconnected है, true. Yeah. Because training and okay. development is also interconnected with a lot of things that we need to see. Yes, So better career opportunities में आ गया, because see skill wise the more you will learn, obviously you will grow. And जितना आप grow yes, करोगे, so internally in the organization also, अब बाहर की कंपनीज में भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं. यूजुअली इसीलिए क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि जब ट्रेनिंग देते हैं, स्पेशली अगर ट्रेनिंग की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ऑर्गेनाइजेशंस आपको एक फॉर्म साइन कराती है दैट द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग कंपनी एक्वायर कर रही है, मतलब आपके ऊपर खर्चा कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है. बट देन इन केस यू लीव बिफोर 6 months और 1 year, जो भी उनका टाइम पीरियड है, जब तक वो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, you cannot change the job. In case you change the job, so your salary will be taken care by you. You will not be paid full salary. Full and final नहीं होगा ये सारा. So ये it's not really a bond kind of a thing, but it's like what do you call it? Kind of contract between discipline. an employer and it's kind of a contract which is signed between employer and employee ki yes I want to grow, and I don't want to invest my own money, so company is investing that money, because obviously company also wants to grow. जितने लोग ग्रो करेंगे कंपनी भी ग्रो करेगी. So there is a contract that they sign. स्पेशली आईटी कंपनीज में बहुत होता है, एंड इट्स वेरी वेरी कॉमन, बिकॉज आईटी में अगर सपोज किसी को उन्होंने पाइथन सिखाया है विच इज़ अ न्यू लैंग्वेज, और पाइथन सीखने के बाद वो कंपनी छोड़ जाता है किसी और कंपनी में हायर सैलरी के लिए, so obviously नुकसान is of that company. So until and unless they don't sign that contract agreement, it becomes difficult. So career opportunities within the organization and outside both are generally opens up. Second point is motivation. So Sakshi, you want to talk about motivation? Yes, ma'am. So as better career opportunities are there for us after training and development, so the person motivate person are motivated towards work, that they like better career opportunities create more incentives to them, so they are motivated towards their work, that if I will do much better, then I will be much in a higher position, and then I can earn more better. Hmm. So overall over a period of time क्या होता है जब आप 5-6 साल से काम कर रहे हो सेम ऑर्गेनाइजेशन या किसी और ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर भी, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग प्रोफेशनली फॉर 4-5 years, सडनली योर मोटिवेशन गोज डाउन, बिकॉज जो आपने कॉलेज में पढ़ा, सब कुछ पीजी किया, कॉलेज किया, कोई डिप्लोमा डिग्री किया, वो सब आपने इम्प्लीमेंट कर लिया 4-5 साल में, आपने कंपनी में सीख भी लिया, इम्प्लीमेंट भी कर लिया, एंड यू सडनली रियलाइज यू आर नॉट ग्रोइंग. So वो motivation to come to office every day starts going away slowly. So that's when new learning and development should be introduced by every organization, so that people are motivated. They feel good to come to office every morning. Right? That motivation can come. Usually motivation theories को अगर हम पढ़ते हैं psychological point of view से या management point of view से, तो motivation theories सब कहती हैं कि intrinsic motivation होना ज़रूरी है, which should come from within every time. So बाहर से जो external या extrinsic motivation होता है वो सिर्फ हम trigger कर सकते हैं कोई भी as a trainer. So all these motivational speakers that you listen to, जो बहुत भाषण देते हैं ऊंचा ऊंचा बोल के चिल्ला चिल्ला के, you must be aware about YouTube and all that, उसका असर थोड़ी देर रहता है,
right, for a time being to the employees. थोड़ी देर सुना उन्होंने, उस टाइम वो बहुत हाइपर हो जाते हैं, वो या आई हैव टू डू दिस, शेयर बन जाओ, सेल्स वेब करना है, ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें. बट थोड़े ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग टू, बिकॉज क्या होता है जब डेली रूटीन में हम आ जाते हैं, डेली रूटीन मेक्स इट वेरी मोनोटोनस. How you can change your daily routine in more creative and innovative way, only in you yourself can do. So for example, अगर HR भी करना है, you know that you have to create a career in HR. राइट, अब हमें 20 साल हो गए HR करते हुए, सो 20 साल के बाद बोरियत आ जानी चाहिए, बट इट इज़ नॉट कमिंग प्योरली बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग समथिंग न्यू इन अ वे, इन द मैनर कि कुछ ना कुछ नया करके रोज कुछ ना कुछ नई ऑर्गेनाइजेशन में. एक तो एक्सटर्नल कंसल्टेंट बनने के बाद ये हो जाता है कि यू गेट अ किक बिकॉज यू आर मीटिंग डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. छोटी ऑर्गेनाइजेशन है 20 लोगों की, आपने उसको 100 लोगों पे बना के भेज दिया, डिफरेंट सोल्यूशंस दे दिए, सो दैट्स ऑब्वियसली अ डिफरेंट थिंग. But people who are working regularly in an organization, also you will see कि HR में 10-12 साल के बाद लोग छोड़ना शुरू कर देते हैं organization. They start thinking of starting something new, या अपना career point change करना शुरू कर देते हैं कि sales पे चले जाएं या किसी और में चले जाएं, purely because of this motivation thing. Right? So you need to know and ensure कि जितनी creativity solutions को implement करने में आप लेकर आ सकते हो, कितनी innovation, that is purely up to you. That's why I'm saying that कि onboarding process, training and development process are few things, few areas जहाँ पर हम creativity और innovation हमेशा लेकर आ सकते हैं. Everything purely as per generation. The people who are directly joining from colleges and universities, generation wise their motivation value changes. जो लोग पैसे के लिए मोटिवेशन लेते थे पहले के, अभी द न्यू जनरेशन इज नॉट जस्ट मोटिवेटेड फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ, दे आर मोटिवेटेड फॉर समथिंग एल्स. Something else can be learning, something else can be new challenges, something else can be the opportunities, growth opportunities. So you need to see what they need. Right? So वो आपको मैप करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में. Alright, Shivang, you want to talk about third point, face challenges? Are you there? Yes, ma'am. Yeah, okay. Face challenges. I think we are facing everyday challenges in our performance or everything what we do. How learning and development is helping you in that? Learning and development will help me. Like if I have some performance issue, so I will take particular training of that skill which I am facing challenges. Right, that's one thing. Very good. और क्या हो सकता है face challenges में? How new skills and development over a period of time can help you in facing different challenges? हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं, so आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट कर क्यों रहे हैं? What is one need of doing learning and development? अगर एक लाइन में बोलना हो. Sorry? Upgrade skill or yes, to upgrade, right, your skill. Yes. Right? From upgradation of skill, what are you going to get? Knowledge. हाँ, नॉलेज तो मिल गया ना, अपग्रेडेशन हो गया, पर उससे क्या फायदा हो रहा है? परफॉर्मेंस में फायदा हो. Correct. So you're performing much better than how you were performing earlier. That is why different skills you learned. Now, when you learned new skills, so that means you're now open to change challenge. You're open to face new challenges that is there in the organization. You don't stay at the same stage जहाँ आपने start किया था, right? क्योंकि जब आपका अप्रेजल हम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल 1 साल बाद कर रहे हैं, वी आर लुकिंग इनटू कि आपकी 1 साल की परफॉर्मेंस क्या रही, उसके अंदर हमने फिर ट्रेनिंग नीड एनालिसिस किया कि कहाँ कहाँ पर गैप्स है अभी भी, कि ये 100% अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं employees. So then what we do, we give them different trainings, capsules, different programs, अलग-अलग चीजें. What these training and development actually helps every individual, doesn't matter in the organization, outside the organization. अभी आप अपने आप को देखो कि what is it helping you out?
Suppose tomorrow you join an organization, you at least are 20-30% more competent to join the organization and face challenges. Right? जो graduation के time पे था वो नहीं है, अब you become little more better after the training. Right? Over a period of time, जब तक हम 6 महीना complete करेंगे पूरा course HR का, then you will be at least 50%, 60% more occupied with different trainings, with different kind of learnings which you can implement. So every training that we go through, no matter where, every learning that we take, no matter how and where, it helps us face different challenges all the time. And that is one of the major benefit of why learning and development should be a very core important part of our lives all the time. Right? अगर company course नहीं करा रही है, I've seen that how people are utilizing their time, especially during Corona. Suddenly Coursera के courses इतने ज़्यादा लोगों को prefer करने लग गए थे. छोटे छोटे courses, capsule courses, people started suddenly taking a lot of certification and all that. LinkedIn ने अब कितने सारे free courses launch कर दी है. That over a period of time you learn at your own pace. जब आपका मन करे आप join करो, and then you do that. Different universities across world are giving free trainings on certain courses. अभी I was reading somebody's article on LinkedIn जिसने पूरी list बना के डाली हुई थी कि ये यूनिवर्सिटीज आउटसाइड इंडिया की हैं सारी और जो फ्री ट्रेनिंग्स दे रही हैं HR के डिफरेंट कैप्सूल्स डिफरेंट मोमेंट्स पे. So how when you join these free trainings, उस पे आपको क्या फायदा होता है? You get to know international point of view of how HR is being used internationally. अब येल यूनिवर्सिटी एक कोर्स करा रही है इंटरपर्सनल स्किल्स इन HRM पे. अब येल यूनिवर्सिटी करा रही है वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस वर्ल्ड. उनका ये कोर्स आई थिंक कितने घंटे का, 32 घंटे का कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट. सो इफ यू कैन ज्वाइन दैट, जस्ट ज्वाइन एट योर ओन पेस. उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि जब आप करना चाहो दिन भर में कभी भी 1 घंटा निकाल के 2 घंटा निकाल के, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, रीड इट एंड देन इम्प्लीमेंट इट. सर्टिफिकेशन के लिए एग्जाम लेते हैं, दैट यू कैन डू. Right, so this will help you out in getting to know different things in HR. हम तो पढ़ ही रहे हैं, but we are more or less studying from the point of view of Indian companies. Right, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज हमें पूरा पर्सपेक्टिव बदल देती हैं कि इंटरनेशनली आपको क्या-क्या चीजें करने की जरूरत पड़ेगी. Alright, so next point पे आते हैं industrial safety. So how do you think industrial safety is introduced through learning and development? What is industrial safety? अंजलि की टर्न है ना. Ma'am, in any organization we are working, we seek safety that we will not get fired by the mercy of boss or who is regulating us. So we need some safety based on our performance and our work also. That if we are giving somebody our time and our effort to grow the company and grow ourselves also, then we also want something back in terms of safety and security, that will be considered as the member of the company and will not get fired as per the right. अलग-अलग इंडस्ट्रीज होती हैं, राइट? यू अंडरस्टैंड दैट? अलग-अलग इंडस्ट्रीज में अलग-अलग प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशली. राइट, अब अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अलग-अलग सेफ्टी हैजर्ड्स होते हैं. सेफ्टी हैजर्ड्स मतलब अगर आप ग्लास का कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी ग्लास से बना रहे हो, सो देन आपको उसको मेल्ट करना पड़ता है, तो मतलब फायर विल ऑल्सो बी देयर, ऑल दोज थिंग्स विल बी देयर. इसीलिए सबसे पहला तो आपको अपने लॉज पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट, कि कौन लोग जॉब नहीं कर सकते हैं. सो लॉ क्लियरली सेज हजार्डियस इंडस्ट्रीज के अंदर पीपल हु आर वुमेन हु आर प्रेग्नेंट, दे कैन नॉट वर्क, kids below age of 14 years cannot work, and other than that also there are certain limitations about who can actually work in these kind of industries. और इंडस्ट्रीज को क्या प्रोवाइड कराना है उनको. सो क्या प्रोवाइड कराना है डिपेंड करता है कौन सी इंडस्ट्री में. हेलमेट्स की ज़रूरत है तो हेलमेट्स होंगे, बाकी के सेफ्टी गियर्स की ज़रूरत है तो सेफ्टी गियर्स भी होंगे. सपोज आपको सीढ़ियों से बहुत ऊपर नीचे उतरना चढ़ना है तो हार्नेस भी होना चाहिए, नी पैड्स भी होने चाहिए. तो ये सब कंपनीज के अंदर इट्स अ कंपल्सरी थिंग्स दैट नीड्स टू बी देयर. सो इंडस्ट्रियल का मतलब यही है कि डिफरेंट इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू प्रोडक्ट्स जो भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, दिस इज मेजरली लार्जली फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स. सो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए.
राइट? अब पटाखे बनाने वाली इंडस्ट्री है, हम कितने खुशी से पटाखे जलाते हैं एवरीबडी ड्यूरिंग दिवाली, न्यू ईयर्स एंड ऑल दैट, जबकि हमारे लॉज में लिखा हुआ है दैट child below age of 14 years should not be creating these things. Still मेजर इंडस्ट्री जो भी यूपी में जितना भी वो सेगमेंट है जहाँ से पटाखे ज़्यादा बनकर आते हैं, इट इज़ रन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ वेयर किड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग दोज, राइट? सो जो ये इन्वायरमेंटलिस्ट जो बोलते हैं कि पटाखे जलाना इज़ नॉट अ गुड थिंग, दे आर नॉट जस्ट सेइंग इट फॉर द इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि पोल्यूशन ज़्यादा होगी, दे आर ऑल्सो सेइंग प्योरली बिकॉज कि किड्स हु आर लेस देन एज ऑफ 14 ईयर्स आर एक्सपोज टू वेरियस थिंग्स. वहाँ आग लगने के चांसेस भी हैं, वहाँ पर मसाला भी है जिससे वो पटाखे बनते हैं, दैट इज़ ऑल्सो हजार्डियस. अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है बच्चों के अंदर. तो ओवरऑल यू नीड टू सी ये सारी चीज़ें लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अंदर वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू एज एन HR टू नो इज कि हर एक लेवल पर जब आप कोई भी सोल्यूशन कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसका नेगेटिव बेनिफिट, नेगेटिव इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है और पॉजिटिव इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है. सो दैट वेज देन यू कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दीज थिंग्स. तो अब बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहे हैं. हमारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, इंडस्ट्रियल एक्ट्स बने हुए हैं, वो सब लिखा हुआ है, बट उनको इम्प्लीमेंटेशन कौन कराए. So as an HR, it's always your responsibility to implement those things on a daily basis, go through those segments. I'll try कि next 1-2 वीक के अंदर ही हार्दिक सर क्लास ले ले ताकि एटलीस्ट एक्ट्स के बारे में क्लियर हो जाए, बिकॉज ही टेक्स दोज क्लासेस फॉर एक्ट, so that you get much more, because ये सब जितना भी हमने पढ़ा है विदाउट एक्ट्स इट्स ऑलमोस्ट 50%. जब तक हम इनके लिंक नहीं कर पाएंगे किस किस एक्ट के साथ कौन सा टॉपिक लिंक हो रहा है, then you will not be able to implement those things properly in the organization. Right? So industrial safety learning and development is purely from manufacturing setup point of view. Industry to industry क्या requirements हैं. Next आता है up to date and newest technology. So Sakshi, your point. Yeah, so through training and development, we used to learn and we update ourselves with new technologies also. So as new technologies are like launched in our environment, training and developments are provided on that technology so that the person can cope up with that technology and use it properly and efficiently. Correct. So easy to understand, right? Any new technology. It can be computer-based technology, it can be manufacturing-based technology, it can be new machines that can be, or any new equipment that is there. अब जैसे होता है इंडियन मशीनरीज बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लगाई होती हैं, बट इन कंपैरिजन टू इंडियन मशीनरीज, जर्मन मशीनरीज आर मच मोर एफिशिएंट. बहुत जल्दी प्रोडक्टिविटी निकल कर आती है उनसे, बहुत जल्दी सामान बनकर निकल आता है. सो पीपल जनरली प्रेफर टू यूज, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव. बट वेन एवर द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट यूजिंग दोज न्यू टेक्नोलॉजीज, सो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर बर्डन कम हो जाता है. जो भी लेबर क्लास है उनको अगर आप ट्रेन कर देते हैं उन चीज़ों के ऊपर, so they start using their time more effectively and efficiently. So that is the benefit of being up to date with newest technology. Okay, next is boost employee morale. Shivang, your turn. Try saying I'm reconnecting, network issues. Okay, so next point is basically boost employee morale is quite related to motivation as well. एम्प्लॉय मोरल कैसे होता है कि हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल हम गेज करते हैं एम्प्लॉयज का कि हाउ सेटिस्फाइड दे आर इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड सेटिस्फैक्शन लेवल कैसे हम गेज कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड एंड सीइंग दैट हाउ हैप्पी एन एम्प्लॉय इज इन द ऑर्गेनाइजेशन. और हैप्पीनेस कैसे पता चल जाती है, जब आप रेगुलरली ऑफिस आ रहे हैं, यू आर पंक्चुअल, यू आर हैप्पी, यू आर डूइंग योर वर्क प्रॉपरली. और अनहैप्पीनेस कैसे पता चल जाती है कि आप एब्सेंटिज्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, अचानक बहुत छुट्टियां लेना शुरू हो गए एम्प्लॉयज़, और अचानक उसने लेट आना शुरू कर दिया, बॉस के साथ चिड़चिड़ हो रही है, फ्रेंड्स के साथ बातचीत या पीयर्स जो हैं ऑफिस के अंदर उनके साथ ठीक से बात नहीं हो रही, टीम मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, टीम के साथ बैठकर एक साथ नहीं कर पा रहे हैं. सो वेरियस सिग्नल्स पीपल स्टार्ट गिविंग फ्रॉम देयर बिहेवियर. So as an HR, it's our responsibility to keep noticing that something is changing in the person's behavior or not. For example, attendance is very important to gauge.
इजीली पता चल जाता है। आपको एम्प्लॉय है जो पिछले 1 साल से बहुत टाइमली आ रहा था, सब कुछ पंक्चुअल है, सब कुछ है, साल में 1 आध बार लेट हुआ कभी। अभी सडनली फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स यू विल स्टार्ट नोटिसिंग चेंज की बहुत छुट्टियां लेनी शुरू कर दी उसने। हर हफ्ते में 1 दिन है या 15 दिन में 2 छुट्टियां ले ली, या लेट आना शुरू हो रहा है या जल्दी जा रहा है। सो देन यू स्टार्ट, दिस इज योर इनिशिएटिव एज एन एचआर टू fix up a time, sit with them and talk and see what is the gaps, why suddenly these things have started happening. So when you start doing that, you can stop one. Maybe an employee might be planning to leave the organization because of some unhappiness. तो वहीं stop हो जाएगा क्योंकि आपने उसको सही time पर handle कर लिया. Second is that obviously somebody is going through some personal challenges, so आपको पता चल गया, so you might be able to help that person out in terms of giving them some leeway on not coming to office on a regular basis, जो भी जिस तरीके की भी policy company के allow करती है. So all these things through learning and development, various, बहुत बार क्या होता है कि एम्प्लॉय का अपने काम से मन हटने लग जाता है प्योरली बिकॉज उनको काम करना आता नहीं है। नई स्किल्स इंट्रोड्यूस कर दी, उनको नहीं समझ आ रहा है, उनको अपना रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं आ रहा है, सो वहाँ उनका मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है। एज एन ऑर्गेनाइजेशनल हेड और एचआर हेड, यू नीड टू इंश्योर कि एम्प्लॉय मोरल इज ऑलवेज बूस्टेड थ्रू लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ऐसे भी जब भी हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, जनरली वी आर वेरी हैप्पी। इनिशियली वी शो क्वाइट रिस्ट्रिक्शन टुवर्ड्स ज्वाइनिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यू विल सी जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइज करोगे तो बहुत वो आता है, लोगों को पकड़ पकड़ के ट्रेनिंग ज्वाइन कराना पड़ता है, दे डोंट रियली कम। बट वंस दे ज्वाइन एंड दे स्टार्ट एंजॉइंग दैट, डिपेंडिंग अपॉन हाउ गुड द ट्रेनर इज, so then they start believing in yes, my morale is improving and I'm learning new things which is required for the organization. Similarly, benefits की तरह importance भी है। क्या importance दे सकती है training and development? Best utilization of resources, जितने भी resources हैं आपके, which is product, money, people, उन सब का best utilization शुरू कर देते हैं organization के अंदर through the use of your skills and development improvement. Less wastage, obviously, like productivity की हमने बात करें manufacturing industry में, if you are trained really well on how the production is being done in an efficient manner, you start learning to do less wastage. Increase profitability, automatically अगर productivity increase हो रही है, knowledge increase हो रही है, so your profitability of the organization is increasing. Similarly, increases competitiveness. Competitiveness is basically two people fighting for the same position, so that also increases over a period of time, because जितना ही जो ज़्यादा लोग सीखते हैं अलग अलग चीज़ें, उतना ही ज़्यादा लोग एक दूसरे के लिए कंपटीशन में उतर कर आते हैं, एंड हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज गुड इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर है रिड्यूस्ड एम्प्लॉय टर्नओवर। Like Abhi, we just spoke about this, that if you are taking care of employee motivation and morale, they know that they are learning something for their own personal development and growth, so obviously they don't want to leave the organization so early. जैसे पुराने टाइम में होता था, बहुत सारे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, जिसमें लोग जल्दी छोड़ के नहीं जाते हैं। लाइक माय फादर स्पेंट इंटायर लाइफ टाइम इन ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन, right? He was a central government employee. पूरी लाइफ उसमें बता दी, because he was getting promotion after every 3.5 years, just fixed pattern. उनको पता है कि हर बार जब भी प्रमोशन होगी उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए भेजा जाएगा। He went to almost I think 2-3 countries, various cities, training and development के लिए. So purely depending upon in which area you're working, generally ये सब चीज़ें आपको कंपनी देती रहती है. So he never felt that need of changing the organization just for few grants, मतलब थोड़े से पैसों के लिए। अभी क्या हो गया, अभी everything has become very competitive. Private organizations है, इसीलिए सैलरीज बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर सकती हैं देना। तो सैलरी ज़्यादा अफोर्ड करने से क्या होता है कि पीपल आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कि थोड़ा सा भी पैसा मिल रहा है ज़्यादा। सपोज यू आर एट 35,000 रुपीज़ राइट नाउ, 1 साल के बाद ऑर्गेनाइजेशन कहे कि हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आपको कॉल आना शुरू हो जाए, 50,000 ले लो उनसे। So obviously from 35 to 50 if you are getting, you will easily be able to make a shift, right? But then you will have to see ki how much learning and development the other organization is giving you, right? That should be one of the point. Generally लोग क्या करते हैं, organization तो change कर लेते हैं, but then they realize कि नई organization जहाँ हम गए हैं वहाँ पर हमारी ना कोई सुनवाई है, they don't listen to us,
We're not growing, there is no learning and development that is happening. So reducing employee turnover, turning learning and development can become a very major point in terms of bringing different challenges and motivation to employees. फिर last है develop positive attitude. Obviously, when you are learning something new, you are developing more positive attitudes towards your team members, towards organization, and for overall day-to-day basis of your work. Right? So these are the few important of learning and development. फिर आते हैं आपके methods training and development के. We take 5 minutes break and then we join. Right? So Okay, ma'am. 7:20 हो रहा है. 7:25 पे we join and then we take care. All right, see you then in 5 minutes.
Shall we start? Yes, ma'am. Yes. All right. Yes, ma'am. Okay, so we are talking now about how we can actually give training and development, how it can be provided to various people in the organization, how it is being actually designed, not designed, delivered. So one first method is classroom programs. So what are classrooms program? Any idea? एक तो कैमरा ऑफ करके बैठ गए हो तीनों, and then you're not talking. How do I know that I'm teaching you? The classroom programs are the Ma'am, I programs have we are put it doing on. right now. Yeah, Anjali, your voice is not coming through. Saki, continue. Yeah, so according to me, classroom programs are like the training and development programs which right now we are doing. We are like you are training us on a HR specialization in classroom basis. We are So all it's not coming. classroom, right? We are majorly doing it online basis. Okay, so offline Classrooms training trainings. will be, this would be online. Classroom programs usually happens offline Okay. when no teacher and students are there, instructor and students are there. So something very similar to how you study in colleges and schools. Right? So you have an instructor, teacher, facilitator, whatsoever you want to call, or in organization we call them facilitator or a trainer, and then they give training on various subjects. Right? Then second is mentoring and coaching. Yeah, but let's talk about इसी का ही classroom programs के क्या benefits हैं. Let's talk about that so that we finish that topic off. So what can be the benefit of classroom programs? अगर कोई classroom में आप पढ़ रहे हो, same class, अगर हम यही वाली classroom में ले रहे होते हैं, so what are the benefits you would get? Ma'am, more interactions can happen because face-to-face interactions are like better. Correct, correct. No network issue. हाँ, absolutely. No in network glitches. सबसे ज़्यादा classrooms को यही खराब करता है, internet. What else? More practically we can learn. Yeah, we can do a lot of action-oriented training. Yeah, more assignments and all that can be happen nicely. Right. So classroom programs have a very major benefit in terms of, like you said, interaction is there. Interaction becomes much more higher. Also, not just because we tend to speak through the words, interaction can also happen through our body language. Right? A lot of things that we start understanding and implementing and knowing because we are using a lot of gestures while we are in the classroom settings. Right? ये सब स्कूल टीचर्स होते हैं, so they have various means of giving trainings. So they have blackboards, they have smart computers these days in the classrooms, so you can actually utilize all those skills. So वीडियो चलाना है तो वीडियो चला के दिखा दिया, कुछ ऑडियो में दिखाना है तो वो भी कर दिया. So you can actually utilize various instruments, equipments in classroom trainings, and hence it can become much more fast paced. Second, it can become much more interesting for individuals. Second आता है mentoring and coaching. So what is mentoring and coaching according to you? Mentoring and coaching can be like one-on-one interaction between mentor and the student. Yeah. So that they can like coach them and mentor them according to their problem what they had, and like yeah, that Coaching can happen in group areas also. Mentoring can generally happen one-to-one areas, majorly. But as such कोई hard and fast rule नहीं होता है. See, like I gave you this example of Chak De movie, right? Chak De India. वहाँ पर भी he was majorly coaching the group completely. So coaching can happen in a group setting as well.
But why do we use training and development ka method? I mean, one of the methods as coaching and mentoring. What are the benefits of it? Because if somebody is needed that particular mentoring part, like in group, actually what happen is that when somebody is responding so quickly, then the attention of the mentor get attracted towards that particular person. And somebody who is having less interest or is not getting as much what the mentor is teaching them, then the person don't get the thing what mentor try to teach them. But in one to one or in mentoring process, when mentor and student interact one to one, then the problem solving aptitude of the student get increased, and the mentor also get to know much about the student weak area and then try to improve that. Hmm. So I think mentoring, that's why mentoring is much needed. And what is the difference between trainer, mentor, and coach? Are they same? Can they be same? Or they are different? And they can be same, but uh, they can also be very like what they are trying to teach particular person. Like if someone is learning yoga, for example, then he or she will be needed a trainer who train that person in group also or in a person also. But in Right. mentoring, uh, for example, we provide tuition to certain student in group, and particularly if some student is so weak, then uh, often parents try to give them mentor who can actually handle the problem of that particular student. And coaching can be in group, basically, because in cricket or in like sports area, mainly coaching are being provided. So these are Difference different, but बताओ. they are, मैम तो difference यही तो हुए, Difference like हुआ they are example very में. interconnected. No, they are not interconnected. एकदम different roles होते हैं. One person can be all three, right? Yes, ma'am. In true sense, right? So maybe a trainer can be a coach to some people and can be a mentor to some people, but the process is not same. So training, like we already spoke about training a lot, right? It is skill based, competency based. You need to learn something new in particular area, skill, competency, or knowledge. You are getting training. Now, coaching can be different from that. Maybe one step ahead, right? One step ahead is that it can actually help you in terms of what are your hidden talents in order to achieve those skills. What are the attributes, what are the other personality behaviors, what are the characteristics that you can develop as an individual in you that can help you achieve your goals. So that is coaching. Now mentoring generally happens when where a mentor does not teach you anything. He or she just gives you direction. They tell you that if you do this, the pros and cons can be this. If you do this particular solution, then pros and cons can be this. So any mentor will never tell you to go and follow that particular path. Teacher can tell you, trainer can tell you, coach can tell you, mentor will never tell you. Mentor will surely just, it's he's like a director. नहीं, director भी नहीं होता मूवी का. He's like a producer कि मैं fund कर देता हूँ, बाकी you design your own destiny, right? You can come to me for guidance. I will show you because I have experience in that area. I have expertise in this area, but my experiences can be different than you. So I will not tell you to follow this path, but I will tell you that these are the pros and cons for following this path. Pros and cons can be benefits and demerits. So you decide. The decision would then be of an individual to whether to follow on this path or not. Mentoring and coaching in organizations are generally used for leadership management, for a higher level of people who understand mentoring and coaching. Or it can be used for people who are, straying away from their goals and objectives on डे टू डे बेसिस कि उनको ट्रेनिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी है, नॉलेज भी बहुत अच्छी है, but then still they are not able to gather their interest together or their passion together to perform their job particularly.
रीजन कैन बी एनीथिंग, कैन बी अ पर्सनल प्रॉब्लम. अब डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारी चीजें निग्लेक्ट कर देते हैं ऑफिस में. बट एनी पर्सन हु इज गोइंग थ्रू से अ रफ डाइवर्स, किसी का डिवोर्स चल रहा है, केस चल रहा है, वो बहुत ज्यादा उनका दिमाग ही वहाँ ऑफिस में नहीं लग सकता, बिकॉज देर इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस गोइंग ऑन इन योर लाइफ, राइट. सो देन बिकॉज इन कंपनीज व्हाट हैपेंस इज, आपने देख लिया कि उनका डे टू डे ऑफिस में मन नहीं लग रहा है, प्रोडक्टिविटी लो हो गई है, प्रॉफिटेबली एफिशिएंसी नहीं आ रही है डे टू डे काम में. बट व्हाट यू डू, बिकॉज यू नो कि स्किल्ड है, नॉलेज भी बहुत अच्छी है, but then there are something other than training which is required. So that's when you start giving them mentoring and coaching. Right? This is then organization design. So divorce can be one of the things. There are other personal areas. बहुत सारी चीजें लाइफ में होती रहती है लोगों के, और जरूरी नहीं है, पर्सनल प्रोफेशनली भी बहुत होती रहती है. अब जैसे यू ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन और शुरू के 4 महीने तो आपको आपके मैनेजर का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा, बिकॉज हनीमून पीरियड होता है. So manager is also sweet to you, you are also nice to them, everything is going hunky dory, बहुत बढ़िया चल रहा है. Then after 4 months suddenly the manager starts showing you the true colors. strict हो जाता है, गालियाँ देता है, गालियाँ in the sense कि हर चीज़ पे टोकना, हर चीज़ पे माइक्रो मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. And suddenly you realize that I am not able to work with him in under this team. And because you are new, so you don't know who to go, where to go, what to talk. So आपके सब कुछ दिमाग में रह जाता है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली काम में आपकी जो प्रोफिशिएंसी थी या प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो रही है स्लोली. So there can be many examples of this. Sorry. Yeah, sorry. So this is how mentoring can differ, right? Different things can happen suddenly. Organizations के अंदर anything, wherever you get disturbed or distracted from your major goals and objectives, from your department goals or your day-to-day goals, वहाँ पर आपका थोड़ा सा problem होना शुरू हो जाता है, right? So that's when we decide, the organization decide whether to give mentoring or coaching. If there is somebody who is in the organization who can provide mentoring and coaching, or else you start hiring from somebody from outside. ऐसा ही mentoring and coaching हम तब भी देते हैं जब when we are doing succession planning. Succession planning is that you are actually utilizing, or you want to promote somebody on a very senior level of the organization. It can be a CEO position, any CXO position, CEO, CEO, CHRO, whatever, CMO. किसी भी आप पोजीशन पर उनको डालना चाहते हैं, because it's a very important position in the organization, and other than your skill and knowledge, you need to know different things as well. So वहाँ पर फिर आपका mentoring coaching start हो जाता है. Generally organization design a program say for 6 months, 8 months, on a longer period of time, and they get to develop, they get to spend time with the leadership people in the organization. So जैसे I'll tell you an example of Tata. अब Tata Group में you know about Ratan Tata, right? He is the only one who is managing everything right now. There is nobody else because he never got married, so he doesn't have his own sons or daughters to take care of the business now. So he started doing certain things कि धीरे धीरे कुछ और बाहर के लोगों को mentor करना शुरू कर दिया उन्होंने, so that keeping in mind कि somebody else who is really really developed, who can really take care of that leadership position and manage Tata in the same way, right? उन्होंने किया था शाहपुर जी पलूंजी के ओनर को, जिसकी डेथ हो गई, साइरस की, राइट, अभी एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हुई है. ही एक्चुअली हायर्ड हिम इन द ऑर्गेनाइजेशन, मेड हिम द एमडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्टेड मेंटरिंग हिम कि वो डे टू डे बेसिस में इन्वॉल्व हो जाए. वो स्लीपिंग पार्टनर पहले भी था, स्लीपिंग डायरेक्टर था, डे टू डे उसमें इन्वॉल्व नहीं था, बट देन ही स्टार्टेड गिविंग हिम दैट ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग on a day-to-day basis. But somehow after a period of 1.5 years, they realized that he is not meant for the business. The way he is running Shapurji Palunji, the organization, is not the right way that Ratan Tata ji preferred, that somebody would take care of Tata.
So उन्होंने part ways कर लिया था. He went out of the organization from the position of MD. So this is how many organizations do that. Right? They keep people in the organization, mentor them so that they can take care of this entire thing. Even in Ambani Group, the same thing happened. Right? Before giving business to their sons, even Mukesh Ambani did the same thing. For over a period of 3.5, 4 years, he actually trained both the sons, mentored both the sons on various skills, various things in the organization before handing them over to different organizations completely. So that's when mentoring and coaching can be useful in organization. फिर आता है थर्ड मेथड, केस स्टडी मेथड. केस स्टडी मेथड आप लोग देख ही चुके हो, मतलब you have really used it also. But case study method as a part of the training can be a little different. How it can become more different than what you have used basically right now is क्योंकि हम लोग बहुत seriously उसके अंदर नहीं घुसे topic के अंदर. Usually क्या होता है, when we are using case study method in training or any development program, we tend to look into various areas of organization. राइट, अभी तो हमने टॉपिक वाइड एक छोटा सा टॉपिक ले लिया था, उसके ऊपर केस स्टडी थी, हमने केसलेट बना दिया था. जनरली केस स्टडीज आर लॉन्गर, 7-8 पेजेस. 7-8 पेजेस मतलब उसके अंदर इंफॉर्मेशन एंड डेटा एंड फैक्ट सब कुछ होता है रियल टाइम बेसिस पे, सो दैट यू कैन एक्चुअली स्टार्ट फाइंडिंग सॉल्यूशंस यूजिंग दोज इंफॉर्मेशन व्हिच इज मेंशन्ड देयर. सो यू गेट टू यूटिलाइज योर स्किल्स, यू गेट टू यूटिलाइज योर इंटेलेक्ट, जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपको फाइनेंशियली पता है, मार्केटिंग के बेसिस पे पता है, whatever. So you can utilize that and give solutions. So case study method for training and development is again used for very specific positions जहां आप चाहते हैं कि कुछ special skills और competencies होनी चाहिए लोगों के अंदर to perform their jobs. Or again you can then utilize this particular method for giving training to leadership positions usually. बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग होता है और कुछ ही लोगों के साथ किया जा सकता है. यू कैन नॉट रियली डू इट इन लार्ज ग्रुप्स. ठीक है. देन आता है वीडियो टिप्स. वीडियो टिप्स आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर कैसे यूटिलाइज होती हैं वीडियो टिप. जैसे हम पहले VCRs में वीडियो टिप देख के मूवीज देखते थे, नाउ वीडियो टिप्स आर बेसिकली यूज्ड टू गिव ट्रेनिंग ऑन योर ओन पेस एंड लर्निंग. So you can learn, you can watch the videos, then with videos there are set of questions which is there. You need to answer those set of questions as part of the training. So these video tapes are either recorded on time, real time jobs को record करके, या फिर कोई उनको करके दिखा रहा है, उसका imitation करके movie type prepare करके, and then they are giving you that training. Or it can be utilized in this manner that suppose we are giving this training here in this classroom, all these sessions are recorded. So sometimes if you do not really want to repeat the same segment again and again, so what you do, you can just share them YouTube video, go through it, learn on your pace. What you don't understand, come back and ask questions. So that's videotape method. Also videotape basically can be used with online, classroom programs as well. Right, like when we do a lot of trainings on classrooms, in classroom programs, we use a lot of audio visual segments in between so that monotonous ना हो जाए. अभी तो ऑनलाइन है तो इसीलिए लंबा टाइम पीरियड नहीं है, पर जब 6 घंटे की ट्रेनिंग होती है तो मोनोटोनस होना शुरू हो जाता है. थ्योरी पढ़ते जाएंगे. सो व्हाट वी डू इज विल बी इंक्लूड लॉट ऑफ रोल प्लेइंग व्हिच इज द नेक्स्ट टॉपिक, केस स्टडीज, देन मैनेजमेंट गेम्स, एंड देन लॉट ऑफ वीडियो टिप्स. सो छोटे छोटे क्लिप्स मूवी के दिखा के या किसी भी चीज़ के दिखा के which can be linked to the topic and we showcase them. Then role playing, very interesting and very important. हम लोग पूरा नहीं कर पाए because you guys were absent that day. So we wanted to do it for interviewing. So interviewing, role playing, जैसे हम शुरू किया था एक दो लोगों के साथ. So role playing can actually give you complete idea about how to perform that particular job. So that is why we use role playing as one of the methods in training and development. कि आपको थोड़ा सा skill सिखा दिया कि कैसे skills में क्या क्या चीज़ें important है, which is theory generally, and then we gave the role to people to perform. It's like a skit या छोटा सा नाटक type बना लेते हैं, and then people have to perform. They are given the screenplays, they have to, the dialects are also written, they have to perform, keeping in mind that they are the managers.
right? So it can be utilized for various topics, can be related to anything. कंज्यूमर बिहेवियर में बहुत यूज़ किया जा सकता है इसको, कस्टमर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग्स में यूज़ किया जा सकता है, एचआर में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको कैंडिडेट को हायरिंग के बारे में सिखाना हो, या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फीडबैक मैकेनिज्म, डिफरेंट टॉपिक्स. सो टोटली डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टॉपिक आप यूज़ कर रहे हो, एनी ऑफ द मेथड्स यू कैन सजेस्ट एंड चूज. फिर आता है बिहेवियर मॉडलिंग. सो व्हाट इज बिहेवियर मॉडलिंग? मॉडलिंग क्या होता है? Ma'am, any sort of work, how we show it as in reality, like एग्जाम्पल ये दे सकते हैं, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हमें मिलता है तो हम उसको एक सेट ऑफ एक आइडिया को, अपने आइडिया को एक फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे दिखाना, लाइक हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटोटाइप बना परफॉर्म लेते हैं दैट हम, टास्क. यस मैम. राइट? जैसे शार्क टैंक में भी दिखाते हैं कि प्रोटोटाइप बना लिया उन्होंने. द प्रोडक्ट इज नॉट लॉन्च इन द मार्केट बट दे क्रिएटेड अ प्रोटोटाइप कि ऐसा लगेगा, ऐसा हमने रिसर्च करी है, इसका ऐसा रिएक्शन आएगा मार्केट से. सो बिहेवियर मॉडलिंग इज लाइक दैट. हियर वी आर नॉट डूइंग इट फॉर प्रोडक्ट, वी आर डूइंग इट फॉर बिहेवियर. सो वी लिस्ट डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट behavioral या personality traits that is required to perform a job. So for example, अगर आप HR में हैं तो HR में आपका behavior कैसा होना चाहिए? You need to be high in emotional intelligence, right? Your empathy should be really good. Communication should be very strong, and communication doesn't mean that only language proficiency. Communication means you're able to uh, put across your Listen thoughts, somebody. your ideas to somebody, and then obviously listen to that as well. So both ways, right? So this is very important. So you need to list down for every job. Generally we do that, we call them behavior competencies. So functional competency जो जरूरी है एक काम को पूरा करने के लिए, which is your skill based kind of a thing. Then behavioral competencies are which is required to do that particular job in everything. So problem solving चाहिए, mediation चाहिए, emotional intelligence चाहिए, ये सब आपका behavior में होना जरूरी है on a day to day basis. You cannot at any time pinpoint say कि मैं punctual नहीं हूँ पर मैं चाहती हूँ पूरी organization punctual हो in HR. Can never happen. अगर आपका HR ही punctual नहीं है, discipline नहीं है, वो कभी भी policy implementation कर ही नहीं पाएगा, because 1000 बच्चे 1000 questions बोल देते हैं. पूरी organization के employees then start asking questions. So this modeling of behavior is that ideal behavior कैसा होना चाहिए आपका. So उसकी training दी जाती है by listing it down and showing it to the people that this is how you can actually do to perform your job better. Right? These are the methods. Rest we will do next week, because अगर अभी हमने शुरू कर दिया it will take a lot of time. So not really getting into it. Any questions so far you can ask. इसके methods will take a lot of time. Training and development के there are different methods, techniques basically to give training. जो भी आपने पढ़ा classrooms and all that, it is just the way of doing that. So like you can see, type of employee training methods can be so many. ये सब तरीके से दी जा सकती है. इसके अंदर जो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी वो भी है, केस स्टडी, रोल प्लेइंग एंड ऑल दैट. देन ट्रेनिंग असेसमेंट, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कैसे होगा, एंड देन मेथड्स आते हैं कि कैसे मेथड्स के साथ आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, कौन कौन से पॉपुलर मेथड्स है ट्रेनिंग देने के भी और फिर असेस करने के भी. सो इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन अंडरस्टैंडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. क्योंकि दे दिया, डिलीवरी कर दी, सिखा भी दिया किसी को, बट उसने कितना सीखा है और हाउ द इम्प्लीमेंटेशन इज गोइंग टू हैपन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू चेंज from that behavior or skill development has to be mapped. That's called evaluation. Kirkpatrick model of evaluation or assessment is the most famous method. I think most of the organizations generally Kirkpatrick model use करते हैं, but कुछ organization 2-3 models को इकट्ठे मिलाकर then they can create. You will see, easy है, मुश्किल नहीं है समझने में. तो theoretically प्रैक्टिकल करने की तो हो नहीं सकता है क्योंकि हम 3 ही लोग हैं क्लास में.
we'll see how we can use that, right? And then next week assignment में I wanted to give you एक assignment तो दिया ही था कल, which is you have to create KPIs for any KPI. position. Yeah, 3 KPIs for any position that you want to. Now I want you to create a performance management form also, performance appraisal form, KPI based. Yeah, management by objectives based. Any form. You will get thousands of forms on YouTube and internet, but create your own. Which one you want to use and why? Right? Don't copy it unnecessarily. क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, कॉपी वाले से you won't be able to gather much knowledge about it कि उसको कैसे यूज किया जा रहा है. So whatever you have understood from your understanding how you want to develop a form. So form के अंदर क्या आना चाहिए? जनरली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर फॉर्म के अंदर आता है नेम, पोजीशन एक्सेट्रा, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, उसके क्या डेजिग्नेशन है, किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन सी डेट को आप ये कर रहे हो, उसका प्रेजेंट उसका फिल हो जाएगा, एंड उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी ऑर्गेनाइजेशन में. ये सब इंफॉर्मेशन आ गई. देन यू क्रिएट द फॉर्म जिसके अंदर आ जाएंगे KPIs क्या है, KPIs का आपने किस तरीके से इवैल्यूएशन करना है, मतलब मैट्रिक्स क्या यूज कर रहे हो आप, कि एक KPI को 50% दे रहे हो, दूसरे को 25, तीसरे को 25, इस तरीके से 100% हो गया, वो करना है. देन आता है ट्रेनिंग एनालिसिस कि अगर एम्प्लॉय के सपोज 5 में से 5 नंबर आते हैं तो उस वाली KPI में उसको ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग की, पर अगर 5 में से 3 नंबर आ रहे हैं तो कौन सी ट्रेनिंग आप उसको देना चाहोगे. सो वो ट्रेनिंग एनालिसिस ऑटोमेटिकली आ जाता है अप्रेजल फॉर्म में. जनरली उसी का भी पार्ट रखते हैं हम लोग, सो दैट बोथ द थिंग्स कैन बी डन एट वन पॉइंट इन टाइम, बिकॉज यू आर already evaluating somebody, you're sitting, you're spending time with an individual. पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर अब उसको आगे लेकर जाना चाहती है. सो व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग दैट टाइम, सो यूटिलाइज इट फॉर अ बेटर. दैट इज व्हाई वी कॉल इट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, कि सिर्फ अप्रेजल तक साइकिल खत्म नहीं करेंगे, उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि आगे आने वाले सालों में हाउ वी कैन यूटिलाइज देयर स्किल्स मच बेटर. राइट Ma'am, we want to have the PPT of all previous classes so that we can revise it. सबकी दे रखी है. आई थिंक सिर्फ कल वाली रह गई है, एक स्मार्ट गोल्स वाली रह गई है और एक कल वाली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की रह गई है. बाकी मैम तो सब कल रेडी हुई आपने है. कोई वेबसाइट यूज करी थी वो भी बोला था आपने. हाँ, अंदर लिंक नहीं भेजा है. करेक्ट, मैं अभी भेज देता हूँ. I'll just send it across to you. थैंक यू. Done. Anything else? नो मैम. All right. Thank you, Shivang, Sakshi, Anjali. थैंक यू सो मच. See you in next class. Thank you, ma'am. Bye bye. Thanks. Good night. Bye-bye.